हमारा पूरा सर्कल क्या है? एक पूरा चांद है ना? और जब किसी को बोलना होता है तो चांद का टुकड़ा बोलते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल जैसे दो सर्कल्स होते हैं जिन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होता है। सो व्हाट इज आर्क ऑफ अ सर्कल? इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। दैट्स इट। यहां से शुरू, टच, एंड, यहां से शुरू, टच, एंड। सो ऑल दीज एंगल्स आर एंगल इन द सेगमेंट। If this is the angle we are taking, what is alternate segment for this angle? This side. Circle के circumference पे जो भी points उनको बस टच करके जा रही है, these become the tangent to the circle. Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and I welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला by PW. अब हम माइंड मैप करने जा रहे हैं आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का, दैट इज आपके सर्कल्स का। अब मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि नाना करते ये इकलौता चैप्टर है जो कि आपका 10 से 12 नंबर का पेपर में आएगा, आ चुका है। 2024 के जब हम अभी PYQs देखेंगे तब आप देखोगे कि कितनी वेटेज रही है इस चैप्टर की, सैंपल पेपर में कितनी वेटेज है। एंड जब इस साल पेपर आया था 2024 में मार्च में, तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो सर्कल्स जब मैं बात कर रही हूँ तो हम लोग सर्कल्स की प्रॉपर्टीज के साथ साथ टैंजेंट्स एंड कॉर्ड्स भी इसी के साथ ही ज्वाइन करके आज करने वाले हैं। इसका वन शॉट हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस काफी ज्यादा प्रूविंग के नहीं है बट एंगल फाइंड के ज्यादा है, जिसके लिए मैंने शुरू से आपको बोला है कि भाई सेगमेंट में एंगल कौन सा है, सेंटर में एंगल कौन सा है, टैंजेंट्स कौन सी हैं, ये सारी चीजों को आपको एकदम क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, जिसके साथ साथ हम आर्क के बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंट, सेक्टर, एंगल प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल की, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, टैंजेंट्स, टैंजेंट एंड रेडियस का रिलेशनशिप, सर्कल्स टचिंग ईच अदर, देन हम लोग नंबर ऑफ टैंजेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, स्पेसिमेन क्वेश्चंस, PYQs के दोनों क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आज काफी ज्यादा हम लोग बेसिकली सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको बोला कि हम लोग सर्कल्स में एंगल प्रॉपर्टीज और टैंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज को इसी लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। अब जब बात करते हैं हम लोग सर्कल्स की, तो एंगल प्रॉपर्टीज में हमारे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग सेगमेंट, ये वाली चीजें आती हैं। जब हम बात करते हैं टैंजेंट एंड सीकेंट की, तो हमारी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना, सीकेंट्स क्या होते हैं, टैंजेंट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है टैंजेंट्स का और रेडियस का, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में करने वाले हैं। ये जो सारी चीजें लिखी हुई है इसके नीचे, उन सब का हम एक बार कंसेप्चुअल क्लियरेंस लेने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, कुछ टर्म्स हैं जो आती हैं इस चैप्टर के अंदर जिनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले बात की जाए अगर कंसेंट्रिक सर्कल्स की, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसे दो सर्कल्स होते हैं जिन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होता है। So concentric circles are the circles which have the common center, right? Equal circles तो हमें पता है, दो ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस एब्सोल्युटली सेम होता है उनको हम लोग इक्वल सर्कल्स यहाँ पर बोलते हैं। जब हम बात करते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल की, तो बेटा कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस से शुरू होती है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे खत्म होती है, बाहर नहीं जाती है। दैट इज व्हाट कॉर्ड इज। डायमीटर कॉर्ड है, बिल्कुल है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। फिर हम बात करते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की। तो बेटा सर्कमस्क्राइब्ड वो होती है जहां पे सर्कल के अंदर कोई पॉलीगन पाया जाता है। इंस्क्राइब्ड वो होती है जहां पे पॉलीगन के अंदर कोई सर्कल पाया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज के बारे में समझते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। हमारा पूरा सर्कल क्या है? एक पूरा चांद है ना? और जब किसी को बोलना होता है तो चांद का टुकड़ा बोलते हैं। तो सिमिलरली यही मान के चलो कि ये पूरा हमारा मून है एंड आर्क मींस हमारे सर्कल, हमारे मून का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। तो अगर इस पूरे सर्कमफेरेंस में से मैं एक पार्ट कोई ले लेती हूं बेटा, इसको बोला जाता है आर्क ऑफ अ सर्कल। सो व्हाट इज आर्क ऑफ अ सर्कल? इट इज अ पार्ट of the circumference of a circle. That's it. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं, दैट इज सेगमेंट। अब भाई सेगमेंट क्या होता है ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब एक कॉर्ड
अगर हम सर्कल के अंदर बनाते हैं तो वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो ये छोटा पार्ट है दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा पार्ट है दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट। अब एक डाउट आपके दिमाग में आता है कि मैम आपने बोला कि डायमीटर भी एक कॉर्ड है, तो अगर डायमीटर सर्कल को डिवाइड करता है तो उसमें से कौन सा मेजर और कौन सा माइनर रहता है। अब क्योंकि डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और वो सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है तो उनको हम सेमी सर्कल्स बोलते हैं। तो उसमें से कोई भी माइनर और मेजर नहीं होता है, दे बोथ आर इक्विवेलेंट to each other। पर जब कॉर्ड डायमीटर नहीं है so it divides the circle into two respective segments। छोटा वाला is the minor, बड़ा वाला is the major segment। अब इन segments में क्या होता है, एंगल बनते हैं। अब कैसे एंगल बनते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि मैं एंगल बना रही हूं मेजर सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में एंगल बनाने का मतलब है कि एंगल यहां से शुरू होना चाहिए, सर्कमफेरेंस पे कहीं पे टच होना चाहिए और यहां पे एंड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां से शुरू होना चाहिए, सर्कमफेरेंस पे टच और यहां एंड, शुरू टच एंड, शुरू टच एंड, शुरू टच एंड। सो दीज आर ऑल द एंगल्स इन सेगमेंट। अब आप बोलोगे मैम नीचे वाले में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहां से शुरू टच एंड, यहां से शुरू touch end, so all these angles are angle in the segment। अगर मैं सारे ऊपर वाले पे बनाऊं तो those are angle in the same segment, सारे नीचे वाले में बनाऊं those are angle in the same segment। इतनी चीज क्लियर है कि सेगमेंट होता क्या है और उसमें जो एंगल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, इतनी बात हमें क्लियर है। अब आगे देखते हैं बेटा यहाँ पे सेक्टर क्या होता है। सेक्टर की बेसिकली इस चैप्टर में ज्यादा डिमांड नहीं है, पर अगर आप सेगमेंट समझ रहे हो तो आपको एंगल एट सेंटर सेक्टर समझना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने देखा कि जो सेगमेंट है वो कॉर्ड और आर्क से कंप्राइज्ड ऑफ होता है, कि अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें और एक आर्क हो तो वो एक सेगमेंट बनाता है। सिमिलरली सेक्टर कैसे बनता है, जब दो रेडियाई और आर्क कंबाइन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक सेक्टर बनता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको एंगल थ्योरम में अभी पता चलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। तो हम एंगल प्रॉपर्टीज की बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है मान लो ये, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैंने आपसे बोला बेटा कि सेगमेंट जब बनता है तो ऊपर के सेगमेंट्स में हम लोग एक लेते हैं कि भाई एंगल इन द सेम सेगमेंट, नीचे के सेगमेंट में बन रहा है सो दोज आर एंगल इन द अदर सेम सेगमेंट। अब यहां पे अगर मैं एंगल बनाती हूं, ठीक है, अब भाई मान लो सबसे पहले मैंने एक कॉर्ड बना ली, इस कॉर्ड ने क्या किया, इस पूरे सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला इज द मेजर सेगमेंट, नीचे वाला इज द माइनर सेगमेंट। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई हमें अगर एंगल्स बनाने हैं तो कॉर्ड की शुरुआत से शुरू, सर्कमफेरेंस पे टच, एंड पे एंड। ये मैंने आपको बताया कि भाई यहां से शुरू और यहां खत्म, यहां खत्म, यहां खत्म, यहां खत्म एंड सो ऑन, है ना। पर लेकिन मान लो कि अगर कभी ऐसा हो कि एंगल सेंटर पे बने, अब ये कॉर्ड जो है मान लो एक ऐसा एंगल बना रही है जो कि एकदम सेंटर पे, कहां से टच होकर आया, सर्कमफेरेंस को छोड़कर सेंटर से टच होकर आया, गेटिंग इट। और एक एंगल और कहां बनाए बेटा कि वो ऊपर रिमेनिंग सेगमेंट में टच होकर आए। तो हम देखेंगे कि भाई ये जो कॉर्ड है ए बी, ये दो एंगल्स बना रही है, एक तो सेंटर पे और एक रिमेनिंग पार्ट्स में। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है बच्चा, कि जो भी सेगमेंट में, मतलब कॉर्ड के शुरुआत से शुरू, सर्कमफेरेंस पे टच और कॉर्ड के एंड पे एंड होगा, उसका जितना भी एंगल होगा, और अगर सेम कॉर्ड या सेम आर्क बेटा सेंटर पे वो एंगल बनाएगी तो वो एंगल कितना होगा, डबल होगा। So that angle will be double the angle subtended in the remaining segment. I hope इतनी बात क्लियर हो। Angle in the same segments are equal। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं यार। अब भाई जैसे ये सर्कल है,
मैंने बोला कि आपने एक कॉर्ड बना दी दैट इज ए बी, फिर मैंने आपको बताया था ये एंगल कौन से बनाएगा सेगमेंट में, ये एंगल बना सकता है, ये एंगल बना सकता है, ये एंगल बना सकता है, टचिंग एट द एंड। सो जब हम बात करते हैं कि भाई ये सेगमेंट में जो एंगल बनाती है कॉर्ड या आर्क, कॉर्ड की शुरुआत से शुरू, सर्कमफेरेंस 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 पे टच और कॉर्ड के एंड पे एंड होगा, तो ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा, ये सारे एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर हमारे पास सर्कल की सेंटर है दैट मींस डायामीटर है, और डायामीटर अगर कोई भी एंगल बनाता है कहीं पर भी तो वो हमेशा कितना होगा बेटा, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। सो व्हाट डू वी से, दैट एंगल इन सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टच होते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जो सर्कल के अंदर है और उसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हैं, ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब क्या है, दैट एंगल ए प्लस एंगल सी will be equals to 180 degree. Similarly, angle B plus angle D will be equivalent to 180 degree. तो एंगल्स कैसे होते हैं, एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं मान लो यहां पे इस ए पॉइंट से एक्सटीरियर एंगल बना देती हूं, एक्सटीरियर एंगल विल बी दिस एंगल, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चा, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए विल बी इक्विवेलेंट टू एंगल सी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाते हैं टैंजेंट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, टैंजेंट क्या होती है, हमने कॉर्ड पढ़ा कि भाई सर्कल के सर्कमफेरेंस से शुरू है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे खत्म है, बात खत्म। हमें सीकेंट भी पता है कि कॉर्ड को ही अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और वो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे बाहर जाती है तो उसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। पर अगर हम बात करें टैंजेंट की, सो टी फॉर टैंजेंट, टी फॉर टच, दैट मीन्स एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट पे, उसके सर्कमफेरेंस पे ओनली वन पॉइंट पे टच करके जाती है, उसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें, अगर मुझे इस पॉइंट से एक टैंजेंट बनानी है, या इस पॉइंट पे बनानी है, या इस पॉइंट पे बनानी है, इस पॉइंट पे बनानी है, या इस पॉइंट पे बनानी है, तो अगर मुझे इन पांचों पॉइंट्स पे टैंजेंट बनानी है तो इस पॉइंट को टच करती हुई बस सर्कल को टच करके निकल जाएगी। इस पॉइंट पे कैसी बनेगी, ऐसी, बस सर्कल को टच करके निकल जाएगी। इस पॉइंट पे कैसी बनेगी, ऐसी, बस सर्कल को टच करके निकल जाएगी। सेम गोज विद हियर एंड सेम गोज विद हियर। तो यहाँ पे ये सारी लाइंस कैसी हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट्स उनको बस टच करके जा रही है, दीज बिकम्स द टैंजेंट टू द सर्कल। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चा यहाँ पे कि कितनी टैंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो उसकी हम लोग बात करते हैं सीधा यहाँ से, दैट नंबर ऑफ टैंजेंट्स दैट वी कैन ड्रॉ। अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, दिस इज फॉर द सेकेंड रूल एंड दिस वन इज फॉर द थर्ड पार्ट। चलो भाई, अब अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर प्रेजेंट है, तो हम उस पॉइंट से पास करती हुई कोई भी टैंजेंट नहीं बना सकते हैं। सो इफ अ पॉइंट इज प्रेजेंट इन द सर्कल, सो नो टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। पर अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ऑन द सर्कल कोई पॉइंट है, अगर मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास करती हुई हम लोग वन एंड ओनली वन टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सर्कल पे कितनी टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल,
right? So how many tangents can be drawn? Infinitely many. But if they say only if we take one point on the circle, through that one point, how many tangents can be drawn? So only one tangent. Now the last part is if the point is present outside the circle. If there is a point present outside the circle in the exterior of the circle, so from this point to this circle, we can draw two different tangents, right? Which two? One like this and the other one like this. So in the circle, no tangent. On the circle, one tangent. Exterior point of the circle, two tangents can be drawn. Now let's move forward to the next. Now what are the properties of these two tangents? We have seen that if a point is present outside the circle, two different tangents can be drawn. What are the properties? First of all, both the tangents will be equivalent to each other. PA is equals to PB. Both the tangents PA and PB will be equal in length. They will be equivalent to each other. I hope this part is clear. The next we have is angle at the center. That means this angle will be equivalent to this angle. And third part, their inclination. That means this angle will be equivalent to this angle. So this is the properties of both the tangents that are drawn from the exterior point to the circle. Now the next concept that we have is circles touching each other. For example, if two circles are touching each other at one single point, so basically the line from the center to their center will cut through their joining point. This is just the statement of it. Now let's move forward to the alternate segment, right? This is not exactly alternate segment theorem. This is a property of tangent and secant. Now there is a relationship between tangent and secant. Now what is that relationship? When a tangent and a secant intersect the circle from the external point. Now see, listen to this thing very carefully, very important. Now see, this PA is a tangent, bacha. This PA is a tangent. This CP is a secant because it is intersecting the circle. CB is a chord, but CP is a secant of a circle. So if a tangent and a secant meet at the exterior point of the circle, meet at any point which is in the exterior position of the circle, so the tangent square, that means PA square, will be equivalent to PC into PB or PB into PC. This theorem will be used. A question from this theorem came in your exam PYQ 2024. So make sure you learn it thoroughly, that the tangent square is equals to PC multiplied by PB, right? No chord is involved. PB and PC, whole secant and the part of secant outside the circle. Now the last thing that we have in theory from this chapter is alternate segment. Now what is alternate segment? Now this is very complicated for some students, but if you are able to understand it clearly, you will rock. So basically, what is alternate segment theorem, bacha? If we have a chord and a tangent touching each other at the point of contact, see, this is my tangent, this is the tangent, and this is the chord. They are touching each other at one point, right? This is the tangent, this is the chord, and they are touching each other at one point. So, the angle made by chord and the tangent. Which are the angles made by chord and tangent? If this is the tangent, this is the chord, the angle made is this or this. These two are the angles made by the tangent and chord, right? So the angles made by the tangent and chord is equal to the angle in the alternate segment. Now what does that mean? If this is the chord tangent, this is the chord, and if we take this angle, so this angle will be equal to the angle in the alternate segment. If this is the angle we are taking, what is alternate segment for this angle? This side. So whichever angle is in the alternate segment will be equal to this part. Same goes for that angle too. Same goes for that angle too. If this is the tangent
this is the chord and they are making this angle. So this angle will be equal to any angle which is made in the alternate segment. Now let's jump to the questions, the specimen questions along with PYQs to check what type of questions are exactly asked in the exam, to check what is the exact scenario, the marking scheme and the marks this chapter holds. The very first in the specimen is MCQ, that is 1 marker question. In the adjoining figure, O is the center, PT is a tangent, find the value of X. Simple question. See how? If this is 110, so this angle will be 70 degree. Why 70 degree? Linear pair, because they are angles on a same straight line QOP. If this is 110, this is 70. Now, there is one more property that the center, that the radius and the tangents are perpendicular to each other. The angle between the point of contact of tangent and the radius is 90 degree. So, this angle will be what? 90 degree. So, if this is 90, this is 70. So, if this is 90 degree, this is 70 degree. So, simply by angle sum property of triangle, 90 degree plus 70 degree plus x is equivalent to 180 degree. That means 160 plus x is equals to 180 degree and the value of x comes out as 20 degrees. So, option number A will be your answer to this question. I hope this question is clear. Let's move forward to the next. Now, in this question, in the given figure, AC is the diameter of a circle with center O. CD is parallel to BC, that is given to us. Okay. So, two angles are given. We are about to find BEC. So, we have to find this angle BEC. Alright. Now, how can we solve it? First of all, see, if this is 80 degree, bacha, this angle will be 100 degree, yes or no? If this is 80, this angle will be 100 by linear pair. Now, listen to this thing very carefully. Chord, angle at the center and angle in the remaining segment of the circle. So, if this is 100 degree, so simply this angle will be half of 100 degree, that means 50 degree. So, angle BEC is equivalent to 50 degree. I hope this question is clear with everyone. Right. Now, the next is BCD. So, we have to find out angle BCD, this whole angle, right? This whole angle we have to find out. Now, the very first part, bacha, the very first part is C. We have calculated this angle as 50 degree, right? BE is parallel to CD and let's take CE as transversal. So, if this angle is 50 degree, so this half will also be 50 degree because of alternate interior angle. What I have taken, that CD is parallel to BE, it is given, and CE as transversal. And CE as transversal. So, what we can say, that angle DCE will be equals to angle BEC as alternate interior angles. Right. Now, the next thing is, see now again, this is the arc, angle at the center and angle in the remaining part. Angle at the center and angle in the remaining part. So, if this angle is 80 degree, this angle will be 40 degree. Yes. So, what is whole DCB? What is whole angle DCB? So, whole angle DCB is equivalent to 50 plus 20 plus 40, that is equivalent to 110 degree. So, angle DBCD is 110 degree. Now, the last part is CED. So, you have to find out this angle. Now, listen to me very carefully, beta. We know that this angle as a whole is 110 degree.
And this angle we have already calculated as 50 degree. Let's say this angle is x, that is CED, which we have to find out. Now, EBCD is a cyclic quadrilateral. What I'm saying is ABCD, this, and this. So we can say that EBCD is a cyclic quadrilateral. So we can say that angle E, what we can say beta? That angle E plus angle C should be equal to 180 degree as they are supplementary. Because they are what? Supplementary. Angle E is what? 50 plus x. Angle C is what? 110 equals to 180. So what do we have? X plus 160 is equivalent to 180. And the value of x comes out as 20. That means angle CED comes out as 20 degrees. So step by step, this is how we do the questions of circle. A simple 4-marker question, 1 from the MCQ and 4. We have more question, 3 marks. So 4, 5, 6, 7, 8. 8 marks till now. Now, some things are given. PT is given to you. This PT is given to you 20 and PA is given to you 16. Okay. So first of all, what you have to do? You have to prove the similarity. So similarity is something that we have already proven in triangles, right? That is already done in triangles. And the next thing that we have is find the length of AB. Now, I have already told you the relationship between the secant and the tangent, that from here, as we can see, that PT square, that means tangent square is equals to PA into PB. Yes, PA into PB. What is PT square? 20 square. What is PA? 16. And what is PB? Let's say this is x. Let's say BA is x. So PB is 16 plus x. So this becomes 16 plus x. So this becomes 400. 16 into 16 becomes 256 and 16 into x becomes simply your 16x. Right? It becomes simply 16x. Right? Let's shift it there. So from x, from here you will get x as 9 centimeter. As simple as that. I hope this thing is absolutely clear with everyone. So the specimen question paper was this much. It holds for around 8 marks. So you can expect at least the question. At least the questions. Right? The question to be at least of 8 marks. Simply you will do what? Solve it. It will be 144 is equals to 16x. And over here we have x is equals to 144 by 16, which will simply give you the value of AB, that is x as 9. Now let's move forward to the PYQs, the question that actually came in the exam this year, not sample paper, PYQs. Let's see the first question, again an MCQ. The value of this angle is given to you. You are asked for QST, this angle. Okay, and QS is equals to PT, is parallel to PT is given to you. Now one thing, what you can say, bacha, the very first thing, that PS is equals to PT. Why PS is equals to PT? Because they are tangents from external point. Because they are tangents from the external point to a circle. So if this angle is equals to this angle, and by angle sum property, if this is 80, this angle is 50 and this angle is also 50. Why? Because in triangle PTS, if two sides are equal, it's an isosceles triangle. So angles opposite to equal sides are also equal. So if this is 50, this is also 50. So that angle sum property doesn't matter. Now, if this line is parallel to this line, so by this side's transversal, this is 50. So this will also be 50 degree. Option number D will be the correct answer for the question, 1 mark. Let's see the next question. In this question, we have to find out OQM, QNS, QS, QMS. Let's solve this question one by one, right? Solving it in every different way. One part at a time. Now, OQM.
What is OQM, bacha? This angle. This angle is OQM. Now, see this thing very carefully. This is the radius, this is the tangent, this whole angle is 90 degree. If this whole angle is 90 degree, this part is 42. So this OQM will be what part? So what we can say from here is angle OQP is equals to 90 degree. Angle OQP can be written as angle OQM plus angle MQP, and that will be equal to 90 degree because this angle whole is 90 degree. So if OQM is unknown, MQP is 42 is equals to 90. So the very first part answer comes out as 48 degree. So this small part comes out as 48 degree. First part done. Second part, QNS. This whole. Now see. Again, the observation in this chapter should be really OP. See, QN chord, this is the tangent, right? Or we can say not the QN chord, sorry, MQ as the chord. Take MQ as the chord, RP as the tangent, angle in the remaining segment. So similarly, we can say if this is 42 degree, this small part will also be 42 degree. Similarly, chord, tangent, angle. So this will be equal to this angle 25 degree. So whole QNS will be 67 degrees. Whole QNS will be 67 degrees. Now, the other thing. Angle at the center, angle in the remaining portion. Yes. So what we can say, if this is 67, this angle will be twice of 67. So what we have? 134 as the correct answer. So 134 is the correct answer for this question. I hope this part is clear with everyone. Yes. Now jump to the third part, QOS. Now QOS is this. Sorry, QNS. Okay, we have calculated QNS in here and QOS also in here. That is 134 degree. Now the next part that we have is QMS. What is QMS angle? This angle. Now listen to me again very carefully, bacha. See, if this angle is 67, what I have said, if this angle whole is 67 and we have to find out this angle, so what we can say, that angle QMS plus angle QNS should give you 180 degree because they are cyclic quadrilateral. So if one angle is 67, so this will become 180 minus 67 degrees. As simple as that. So 113 degrees will be the correct answer for this question. 4 marks in the pocket. Let's move forward to the next question. Now over here it is one more question of 3 marks. So solve it up. So all the things are given, the angles are given, AB is equals to AC, it is mentioned, and it is also mentioned in the question that it is isosceles triangle. So AB is equals to AC. We have to find ABC angle first of all. Very easy. Very easy. See this angle. This is 65 plus 65. If this small part is 65, this small part is 65. So whole angle is 130. And now angle at the center and angle in the remaining part of the circle. So this angle will come out directly as half of it, that is 65 degrees. Easy peasy. Now next, angle BAC. Now see, BAC. Very easy. Let's do it. Let's find out angle BAC. See, this angle is 65 degree. This side is equals to this side. So this angle will also be 65 degree. So this remaining by angle sum property of triangle comes out to be 50 degree. Very, very simple. Very, very simple and very, very bacha easy to do, easy to go.
Now the next thing that we have is BCQ. Now BCQ is this angle. Which is this angle? This angle is formed between chord and the tangent. So it will be equal to that in the alternate segment, which already we have found out to be 50 degree. 3 marks again in the pocket. So till now you have question worth first one MCQ, then 4, 5, then 3, 8, and one more 3. That makes it to 11. So this year in March, circles came up for 11 marks. This question, halwa. In this figure, what is given to you? Let's say it is given to you that PA is 24. From here to here it is 24 and the diameter PA is 24, the radius is 9. See, this is the radius, that is 9. Radius and tangent perpendicular to each other. Radius and tangent are what? Perpendicular to each other. Now see, if this radius is 9, so OA is also 9. Yes, if this radius is 9, so OA is also 9. If OA is 9 and from P to A it's 24. So how can we find the length of PO? PO is equals to PA minus OA, that is the radius of the circle. That means 24 minus 9, that gives you 15 centimeter. Why there is a need to calculate PO? Why do we have to calculate PO? We have to calculate PO because this forms a right angle triangle and we can simply have the base, we have the hypotenuse, we can simply calculate OP, that is the perpendicular. So what we can say that OP is equals to QP is equals to under root of, we have OP square minus OQ square, which is equals to under root of 15 square minus 9 square, which is under root of 225 minus 81, which is under root of 144, that simply gives the value as 12 centimeter. So this was all about the chapter, this was all about the question, and I hope that each and everything is absolutely clear with you people. If you have any doubt regarding the chapter, so please feel free to comment down, and please do not skip this chapter. It is really very important. It will hold up to 8 to 11 marks entirely, single-handedly chapter in your finals. So make sure you learn it, practice it, study it, and have a good observation for this chapter. So I'll see you in the next mind map. Till then, take care. Have a great time ahead. Bye-bye everyone. Thank you so much.